ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मैंने सबको लिंक्स शेयर कर दिए थे, बट आई थिंक स्टिल नो बडी has shown yet. It is more than 5 minutes, so I'm going to start with the class. This class is being recorded and it is being uploaded on YouTube as well. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ द सेशन ऑफ JRF 2023. इसका एक इंट्रोडक्शन सेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, जहाँ पर वी अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज़ JRF, व्हाट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF एग्जाम्स, एंड देन वी हैव मूव्ड टूवर्ड्स वन सेकेंड okay. Then we have moved towards more details like minimum, what is the minimum criteria to apply, or you can say to give this particular examination. उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन फ़ीस और बाकी सारी डिटेल्स जो UGC नेट से रिलेटेड होती है वो सारी हमने देख ली. इवन प्लानिंग भी देख लिया, लाइक हाउ टू प्लान दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो ईजी टॉपिक्स है कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड टीचिंग. एंड इफ़ यू डोंट नो द शेड्यूल, अगर आपको शेड्यूल नहीं पता, देन लेट मी शेयर द शेड्यूल विथ यू. हमारा शेड्यूल रहेगा सुबह 7 AM. वी विल बी स्टार्टिंग विद टीचिंग एप्टीट्यूड. सो आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर है और कल भी डेमो लेक्चर होगा. सो वील हैव 2 डेमो लेक्चर्स ऑन 1st of May एंड 2nd of May. 1st 05 एंड 2nd 05 कल भी टीचिंग एप्टीट्यूड होगा. उसके बाद जो भी सिर्फ पेड लर्नर्स होंगे उनकी ही क्लासेस होंगी. एंड देन 9 PM पे विल स्टार्ट विद ICT. आज हम ICT का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इन द इवनिंग 9 PM. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल फॉर डेमो लेक्चर्स. नाउ इफ़ आई स्टार्ट विद टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कोर्स बहुत ही वास्ट है, और जैसे जैसे यू कैन से ईयर्स जा रहे हैं, दे आर आस्किंग मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस. ओके, लाइक okay, for sorry to interrupt in between, but these are certain books you can refer. Of course I'll provide you PDF, but if still you want to do a detailed study, these are the popular books in the market. The best would be, of course, the top one, that is KVS Madansa's key book. This is updated every year, and I think it has a cutting edge, because आई थिंक इनका 7th या 8th एडिशन आया है अभी लेटेस्ट में. एंड द कंटेंट इज़ वेरी डिटेल्ड. जो भी ज़ीरो से भी पढ़ना चाहते हैं, इट इज़ बेस्ट फॉर देम. सो यू कैन जॉइन दैट. और एल्स, हाई मरियम, हाउ आर यू? देन वी हैव हरप्रीत कौर एंड ट्रूमैन एज वेल. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ना. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या इंक्लूडेड है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूडेड इन टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, फाइन. टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. कंसेप्ट आ जाता है. कंसेप्ट के बाद वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट लेवल्स. इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. आफ्टर लेवल्स वी हैव प्रोसेस ऑफ टीचिंग. इसका क्वेश्चन 2021 में पहली बार आया था. देन टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग, from training, from instructions, various modes of teaching. Modes of teaching is one of the most detailed topic, I could say. बहुत लंबा topic है. After that we also have teaching tools, teaching aids. इसके questions regularly पूछे जा रहे हैं. Teaching aids के classification के, what are teaching aids. Then we also have learner, the characteristics of learner, types of learner, so sorry, dimensions of learner. हाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस ये भी पूछा जा रहा है. लर्निंग डिसऑर्डर्स लाइक डिस्कैल्किया, डिस्ग्राफिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ब्लूम टैक्सोनॉमी, हर बार एक क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो. adolescents and adult learners, teachers, characteristics of teachers, evaluation पे हर बार एक क्वेश्चन आता है every time. इन द लास्ट जो भी ट्रेंड मैंने देखा है उसमें evaluation के टाइप्स, evaluation के नीड्स, evaluation के objectives, and after completing the entire evaluation, because evaluation is also a big topic, we can go from maxims of teaching. Maxims means truth. इसकी भी 11 different points है. एंड सो ऑन, लाइक देर आर लॉट नंबर ऑफ टॉपिक्स जो आपने शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, बट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम ज़ीरो. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो.
विच इंक्लूड्स लाइक ऑल द थ्योरीज ऑफ टीचिंग ऑल्सो एंड एवरीथिंग. काफ़ी सारी चीज़ें लेटेस्ट में इंक्लूड हुई हैं, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है. सो दिस वुड बी लाइक अ कंप्लीट थिंग फॉर यू. इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो शायद कभी पूछा गया हो बट मैंने इंक्लूड नहीं किया है. दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक अ वेरी लार्ज PDF टू बी वेरी फ्रैंक. बट येस, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग जो भी है. लाइक फ्लिप्ड क्लासरूम पूछा जाता है, ब्लेंडेड लर्निंग आजकल पूछा जाता है, माइक्रो टीचिंग, देन वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट. We also have, yes, the difference, single loop learning, double loop learning, triple loop learning and what not. तो जितना भी अभी तक पूछा गया है मैंने सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया है. आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है. दैट आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल. ओके, नाउ let's start with today's lecture. Today we'll start with what is teaching. Teaching क्या होता है, that is very basic, and then we will do with the characteristics of teaching. At least आज हमारा introduction हो जाना चाहिए और इतना हो जाना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले what is teaching. Teaching का मतलब क्या होता है? Just let me go to the first page. One second everyone. Okay, we can start from here. This would be better. Now, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे with what is teaching. Teaching क्या होता है, ठीक है. नाउ टीचिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं नेट के एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, इवन मैंने नेट की पढ़ाई की है और मैं नेट की टीचिंग करवा रही हूँ फ्रॉम लास्ट 4 years. ओके, देन व्हाट हैपन्स इज आई एम अ पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट. मैं कौन हूँ? एक ऐसे पर्सन हूँ जो एक्सपर्ट है या जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हु इज़ हेल्पिंग द अदर पर्सन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट मच. आप कौन हो? आप ऐसे पर्सन हो जो उतने एक्सपीरियंस नहीं हो. ठीक है, नाउ इन दिस केस आई एम द टीचर एंड यू आर द लर्नर. सो हियर इफ आई कैन talk about, teaching is a process in which learner, some students like you, teacher, someone like me, एंड अदर वेरिएबल्स यहाँ पे क्या आते हैं? हमारा सिलेबस आएगा, हमारा करिकुलम आएगा, ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड आएगा. एवरीथिंग आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे. हम किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल. एक ऑलरेडी एक गोल है हमारा, हम उस गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सारा काम कर रहे हैं. दिस टीचिंग इज हैपनिंग. नाउ if you have seen in the olden days, like बहुत you can say olden days, like 1000 years ago or so, you would have specifically in India gurukuls were the places जहाँ पर there was a teacher, there were a students, and there was a level of interaction between the students and teacher that helped to transform this teaching process. तो ओल्डन डेज में क्या होता था? ओल्डन डेज में टीचर होता था, स्टूडेंट्स होते थे और बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे. बट अगर आप अभी मॉडर्न का देखो ना, ठीक है, इट इज़ स्टिल द सेम थिंग. मतलब ऑफकोर्स बहुत सारे एलिमेंट्स चेंज हुए होंगे. जस्ट लाइक आई कैन से नेचर के बीच में पढ़ाने की बजाय वी हैव मोर systematic classrooms. Okay, we have benches, we have AC, we have different course curriculum. That is absolutely correct. बट अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे ना, इन दो इमेजेस में मेजर डिफरेंस, तो यहाँ पर भी वी हैव टीचर, यहाँ पर भी वी हैव स्टूडेंट्स. दैट इज ऑल पॉसिबल, राइट? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. पहले हम यू कैन से जो क्लासेस होते थे या स्कूल्स होते थे वो ओपन एयर में लेते थे. बट राइट नाउ द क्लासेस आर मोर टेकन इन अ क्लोज क्लासरूम, अ मोर सिस्टमैटिक वे. एक पूरा स्ट्रक्चर है जो ओल्डन डेज में नहीं हुआ करता था. बट ओल्डन डेज और न्यू जो मॉडर्न डेज है उसमें अगर आप कंपेयर करोगे ना, देर आर टू थिंग्स विच आर स्टिल कॉन्स्टेंट और सेम. द फर्स्ट इज द टीचर एंड द सेकेंड इज द स्टूडेंट. सो ऑफकोर्स फॉर टीचिंग वी नीड बोथ द पार्टीज, दैट इज द टीचर as well as the student. तो ये रहा हमारा सबसे पहला डेफिनेशन. इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, you can check that out. Moving forward with the next one,
टीचिंग इज अ डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे टीचर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है द बिहेवियर ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड हेल्प्स हिम और हर टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. सो व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम यहाँ पर क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है, सो आई एम शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग दैट नॉलेज विद द स्टूडेंट हु इज लेस एक्सपीरियंस्ड, हु डजंट नो दिस मच, हु कैन मेक मिस्टेक्स. सो आई एम गाइडिंग दैट पर्सन, आई एम हेल्पिंग दैट पर्सन. एंड इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो स्मिथ सर ने बोली है, वी नीड टू रिमेंबर दैट टीचिंग कैन बी कैरिड आउट विदाउट एनी टीचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Teaching can be carried out without any teacher. Now, without teacher, how can you carry out teaching? If this is a simple question, let me answer you. अगर सपोज टीचर नहीं है बट बच्चा ऑब्जर्व करता है, लाइक चिल्ड्रन डू ऑब्जर्व वॉट द अडल्ट्स आर डूइंग, लाइक आर दे स्टडिंग और नॉट, और आर दे व्हाट आर दे डूइंग. ठीक है, जैसे अगर सपोज आप कोई गलत काम करते हो, गलत हरकत करते हो, तो आपका बच्चा फटाफट पकड़ लेता है, वो चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, वो चीज़ को क्या करता है, सीख लेता है. जैसे कोई गाली देना हुआ या एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट यू हैव, योर चाइल्ड विल पिक अप ऑन दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. वाई? बिकॉज इवन दो यू डिड नॉट टीच देम, ज़रूरी नहीं कि आपने उसको सिखाया हो, बट बाई ऑब्जर्वेशन अलोन द चाइल्ड कुड डू दैट. So this is one of the important lines which you need to remember. Teaching can be carried out without any teacher because child can learn through observation. You need to remember that. So observation is one of the ways of learning. और बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करके सामने वाले को देख के, ठीक है, सामने वाले पे ध्यान दे के ऑब्जर्व करके क्या कर सकता है, अपना यू कैन से अपना लर्निंग कर सकता है. सो टीचिंग कुड बी टेकिंग प्लेस, टीचिंग कुड बी कैरिड आउट विदाउट एनी टीचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग, वेरी सिंपल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल इज बेसिकली मोर स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, ज़्यादा बेटर रहता है, कंपैरिजन बहुत ईजी है. जैसे फॉर्मल टीचिंग आपका होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, Ankit, good morning first of all, and second of all, this is actually a paid course which I have started. If you're not aware about the course, let me give you a bit of a detail, and then if you are aware, then we can move forward. So see, NDA UGC NET set and JRF exams. So what you can do is you can get enrolled through this number. The number is there on your screen, 92657 and 99867. Classes will be starting from 1st of May. So this is the first demo class. I'm providing 2 demo class free of cost. That is on 1st of May and 2nd of May. And after that we have live classes. Timing would be 7 a.m. for teaching aptitude and 9 p.m. for ICT. If you want to enroll, you can just WhatsApp me. I'll give you 2 free demos, and this is right now going in a Zoom call. So if you want to attend a Zoom call so that you can ask me questions directly, that is also possible. And this is for all of you people. अगर आपको join करना है paid classes और उसके लिए अगर आपको demo देखना है, so what you can do is you can come to the class. You can register through WhatsApp, और WhatsApp पे अगर आप मुझे मैसेज डालोगे, आई पुट यू इन अ WhatsApp ग्रुप जहाँ पे मैंने सबको लिंक्स प्रोवाइड किए, एंड विद दोज लिंक्स यू कैन ज्वाइन द Zoom कॉल, एंड इन द Zoom कॉल विल बी एबल टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. सो वो फैसिलिटी है. एंड वी हैव 2 पार्टिसिपेंट्स. ओके, डन. ठीक है, सो दिस कुड बी डन. If you want to join, you can just WhatsApp me on this number. ठीक है? Now, let's continue. And this is from 0. Like, Ankit, this is from 0 only. Fine? Now, formal teaching and informal teaching. Now, what is formal teaching and informal teaching? 17th May. Okay, you need backup classes. Okay, I will be recording all the classes, and if you want the backup classes, that would also be available. So if there is a case कि आप live available नहीं हो, you need recorded classes, I will be providing you with the same. Don't worry about that. Okay, चलो.
नाउ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग? कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में दो चीज़ें हैं, वेरी इजी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? फॉर्मल इज मोर स्ट्रक्चर्ड इन नेचर. फॉर्मल आपको यू कैन से यू कैन it's more organized, more structured, and it is more, you can say, formal. In the sense जैसे schools, colleges, universities या any kind of online courses, these are formal teaching. Even right now if you are attending this demo class, this is also a formal teaching. Why so? Because यहाँ पर there is a start date, there is a end date. After end date you will going to get certain results. So formal teaching is basically carried out by professionals called teachers or faculty. So what is the formal teaching? Formal teaching is carried out by paid professionals that are called teachers or faculty. Whereas if I talk about one second, where is the video going? Okay, so sorry. हाँ, now informal teaching क्या है? Informal teaching is carried out without the with the family and community during the initial years of your life. So informal teaching क्या होता है? Informal teaching उतना structured नहीं होता. जैसे अगर मैं बात करूँ आपके parents की, आपके teachers की और any other persons, then what happens is आपके parents, आपके friends, आपके colleagues, आपके community members, they help you from time to time. जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, वो तभी आपको मदद करते हैं. So they are not very organized, they are more involved in your initial years जब आपको actual में ज़रूरत होती है. अब इसके examples अगर मैं लेने की कोशिश करूँ, so right now this Zoom call is a formal teaching. If I talk about this Zoom call right now, then it is a formal teaching. But what if I say when your parents teach how to behave? मतलब आप शायद कहीं आपका बिहेवियर बहुत और था, या आपने वहाँ पे ढंग से किसी से बात नहीं की और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते सबके सामने, you should be like talking to everybody, you should socialize, then that is informal teaching. So that is a clear difference between formal teaching and informal teaching. Okay, इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. एंड the person who has joined the Zoom call, could you please tell me your name? The person who has joined the Google call, could you please tell me your name? Not Google call, Zoom call. Are you there? Okay. This is also available in Hindi. अगर आपको हिंदी में देखना हो तो हिंदी में देख सकते हैं. Then let's start with the characteristics of teaching. Characteristics of teaching is one more important topic because इसके ऊपर से कई बार questions आते हैं, and all these points are very very easy. The first is it is a system of action. Now system is basically an entire structure. Okay, system का मतलब होता है पूरा एक structure होता है. Like I could say the entire process. We have inputs, we have processing, we have outputs. और इसका जो पूरा प्रणाली होता है या इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं. ठीक है. सो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन. इट इज़ एन एंटायर सिस्टम वेयर many things takes place. There is a teacher, there is a student, there is teaching going on, there is learning going on, there is involvement of a curriculum, evaluation, everything. So system, it is a particular organized system of action. Then it is a professional activity. याद रखना प्रोफेशन वही कंटिन्यू कर सकता है जो जिसके पास डिग्री हो, राइट. जैसे डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर तभी बन सकते हो जब आप MBBS कर चुके हो. ठीक है. हेलो जोशी, हाउ आर यू? देन इन द सेम वे अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो आई शुड बी क्वालिफाइड फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लियर्ड माई नेट एग्जामिनेशन. नेट एग्जामिनेशन मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू टीच. आई कुड अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर or for PhD. So what is this? This is my profession. This is a professional activity. So you need a particular qualification to do that. तो ये जो रेड में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, प्लीज़ यू ऑल्सो नोट इट डाउन. दीज आर द की वर्ड्स.
कई बार क्या होता है, इन कीवर्ड से ही क्वेश्चंस बनते हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कीवर्ड किसको रिलेट कर रहा है. अगर मैं बोलूँ प्रोफेशनल एक्टिविटी, सो इट इज़ रिलेटेड टू माई क्वालिफिकेशन, इट इज़ रिलेटेड टू माई डिग्री, इट इज़ रिलेटेड टू माई पर्टिकुलर एग्जाम दैट आई हैव गिवन और नॉट एंड आई हैव पास्ड और नॉट. Whereas if I talk about interactive process, so it is related to communication. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक एक में डिफरेंस क्या है. नाउ सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, येस, जो भी आप टीचिंग कराते हो, देन व्हाट डू यू एनालाइज योर टीचिंग, यू असेस योर टीचिंग बाय इवैल्यूएटिंग योर स्टूडेंट्स, बाय इवैल्यूएटिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट. तो जो भी शिक्षण होता है उसका विश्लेषण और मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उससे ही मुझे पता चलेगा कि बच्चों को कुछ समझ आया कि नहीं आया. ठीक है, great Joshi, I'm also good. Now interactive process means it includes communication. It is a two-way process. मैं कुछ बोलूँगी तो आप लोग जवाब दोगे, आप लोग जवाब दोगे तो मैं कुछ बोलूँगी. So this is a two-way process. It is a specialized task. Specialized मतलब only the people who have the knowledge, only the people who have the experience can do this. So the difference between the professional activity and specialized task is professional activity is dependent upon your qualification, upon your degree, upon your exam, whereas specialized task is based on your knowledge of that particular topic, your experience on that particular topic. So इस तरह के differences आपको पता होने चाहिए. It is collection of various modes. Yes, we have various methods of teaching: large group teaching method, small group teaching method, individualized teaching method, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, लर्नर सेंट्रिक मेथड, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं. सो डोंट वरी. Now, it has different levels of teaching. We have 3 different levels of teaching. If anybody knows the levels, you can please comment here. Even on Zoom also, I think you'll be able to comment. One second. Yes, in the chat box. Okay, hi Chirag. I thought you were going to say something, but no issues. Fine. Okay, Chirag, if you know the different levels of teaching, if anybody knows the different levels of teaching, please do let me know. हम यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कितने levels होते हैं. ठीक है, it takes place in a dynamic environment. Now what is dynamic? Dynamic means which keeps on changing. It changes every time. बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. बताए बहुत पहले हम लोग गुरुकुल्स में पढ़ते थे, राइट? स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया. ओके, तो इंडिया में जैसे गुरुकुल्स में पढ़ते हैं हम लोग, क्या हम अभी भी गुरुकुल्स में पढ़ते हैं? नो, वी हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ओल्ड मेथड टू द न्यू मेथड. यस, पिक्चर स्काई, दैट इज द करेक्ट आंसर. चिराग, इफ यू डोंट नो, बेसिकली हमारे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं. दैट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. ये हम आगे करने वाले हैं. नो इशू, नो, डोंट वरी ऑन दैट. बट येस, दीज आर द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. और एक और आया ऑटोनोमस लेवल, वो भी हम लोग करेंगे. ओके, मूविंग बैकवर्ड्स. ओके, हम कर रहे थे दिस, लाइक टीचिंग इज अ डायनेमिक एक्टिविटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? Dynamic means which keeps on changing. So in the olden days there was a teacher, there were students, but the environment was completely different. ठीक है, आज भी टीचिंग होती है, आज भी टीचर्स होते हैं, आज भी स्टूडेंट होते हैं, बट एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे टीचिंग नहीं हो रही? यहाँ पर भी टीचिंग हो रही है, यहाँ पर भी टीचिंग हो रही है. तो फ़र्क क्या है एनवायरनमेंट का? यू कैन से जैसे बहुत पहले गुरुज जो भी बोलते थे, बच्चों को सब कुछ करना पड़ता था. बट क्या आज पॉसिबल है? नहीं. आज एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो चुका है. स्टिल, कैन वी हैव द सेम टीचिंग स्टाइल वी यूज्ड टू हैव 100 years ago? No, because teaching takes place in dynamic environment. Environment कितना भी चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचिंग तो होती ही रहेगी. ओके, द नेक्स्ट इज इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. आर्ट मीन्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अगर आपको नहीं पता हो तो. साइंस मीन्स यूनिवर्सल कंसेप्ट और कॉज एंड इफेक्ट. अब साइंस का एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल साइंस. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट आर्ट, ओके, इट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जैसे अरिजीत सिंह का आप गाना सुनो और सेम गाना, सेम लिरिक्स, एवरीथिंग आप कैलाश खेर का सुनो, एंड इफ द सेम सॉन्ग इज संग बाय आतिफ असलम, सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के आप इमीडिएटली पहचान जाओगे कि ये अरिजीत सिंह ने गाया है या कैलाश खेर ने गाया है या आतिफ असलम ने गाया है.
वाई? बिकॉज इन सबकी आवाज़ हल्की सी अलग है और ये अपनी कला को हल्का सा अपने स्टाइल में प्रदर्शित करते हैं. इवन द सॉन्ग इज सेम, द टून इज सेम, द गैप इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. Still you'll be able to find a difference. Still you'll be able to identify who sung it. तो in the same way जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली टीचिंग की, तो आर्ट एंड साइंस में क्या होता है कि हर एक टीचर, जैसे मैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही हूँ, वैसे ही ऑनलाइन 10 लोग करवा रहे होंगे, करेक्ट. बट टॉपिक सेम रहने पर भी मेरा तरीका अलग है, बाकी सारे टीचर्स का तरीका अलग है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन आर्ट, ये कला है. एंड साइंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाउ इट इज क्लोज रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. याद रखना, इट इज क्लोजली रिलेटेड बट नॉट सेम. प्लीज याद रखना, मैं टीचिंग को एजुकेशन नहीं बोल सकती, सॉरी, मैं टीचिंग को ट्रेनिंग भी नहीं बोल सकती, मैं टीचिंग को इंस्ट्रक्शन भी नहीं बोल सकती. सो व्हाट इज ऑल दैट? Teaching can be closely related to this. Teaching is related to education. Teaching is related to training. Yes, but teaching is not education. Teaching is not training. So that is the difference. It tend towards self-organization. ये क्या करता है, धीरे धीरे आपको एक self-organized way में ले जाता है, especially for teachers. This helps you to understand various concepts in a systematic manner. Because I'm a teacher, मुझे पता है पहले टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, फिर रिसर्च, फिर RC, communication. So this helps us in organizing everything properly for the students. Yes, Prachi, that is the right answer. That is memory level, understanding level, reflective level. Very correct. Now, characteristics of teaching. Characteristics of teaching में it is a social service. समाज सेवा है. क्यों समाज सेवा है? क्योंकि हम लोग एक एफिशिएंट मेंबर दे रहे हैं सोसाइटी को. हम सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक बहुत अच्छा मेंबर प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ टीचिंग. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. टीचिंग आज चल रहा है, कल चलेगा. जैसे मैं नर्सरी से पढ़ कर आई हूँ, करेक्ट. आप लोग भी नर्सरी से पढ़ कर आए हो. जो बच्चे शायद 3 साल पहले पैदा हुए होंगे, अब नर्सरी में जाना शुरू कर रहे हैं. तो डोंट यू थिंक कि टीचिंग चलती जा रही है? इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. एंड इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ. स्कूल में आप पढ़ाई करते थे, कॉलेज में आप पढ़ाई करते थे. अगर अभी आपकी जॉब है तो भी आप हर रोज़ कुछ नया सीखते हो. हाँ, पढ़ाई नहीं करते, बट कोई नया एप्लीकेशन को यूज़ करना, कोई नई मेथडोलॉजी, एनीथिंग न्यू यू आर गोइंग टू यूज़. येस, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये क्या है? कंटिन्यू चलता रहता है. यू कैन नॉट स्टॉप इट. द नेक्स्ट इज इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ autonomy. Autonomy here means freedom. It has high level of independence, high level of freedom. तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ फ्रीडम क्यों है? मुझे इस तरह पढ़ाना है तो मैं इस तरह पढ़ाऊँगी, मुझे किसी और तरीके से पढ़ाना हो तो मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊँगी. तो टीचर को ये फ्रीडम होती है, ये इंडिपेंडेंस होती है, दैट ही और शी कैन teach in his or her style. That is possible. Okay, so we have a high degree of freedom in our teaching activities. It includes lengthy period of study and training. Yes, अगर suppose मैंने ये 300 pages की slide बनाई है, सॉरी 300 स्लाइड्स का PPT बनाया, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा. येस, मुझे बहुत ज़्यादा यू कैन से एफर्ट्स लगे होंगे, टाइम लगा होगा to collect all the content, to write it down, to present it properly with the pictures. So what is this? This is teaching. If you want to teach, you need to study for very long hours. You need to get training for very long hours. Then only you can become a good teacher. The last is, it is essentially an intellectual activity. Now what do we understand by intellectual activity? It is just your mind. Okay, ये आपके दिमाग से रिलेटेड है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है कि कोई कर रहा है तो आपको पता चले. जैसे अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पे या मोबाइल पे आराम से देख के कुछ लिख रहे होंगे. सो ये क्या है? सिर्फ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज नो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हियर, ओनली मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन. फाइन. सो दिस वाज आवर टुडेज फर्स्ट लेक्चर. वी स्टार्टेड विद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन किया हम लोगों ने. टीचिंग क्या होता है वो देखा, कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग देखा, एंड characteristics of teaching. So if there is any doubt, Chirag, you can ask. If there are any questions, you can ask. And evening में we can start with ICT का इंट्रोडक्शन करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि what is ICT basics and yes, not history, generations of computers. याद है फर्स्ट जनरेशन,
वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, वो सब हम याद करेंगे आज शाम को 9 बजे. सो चिराग, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन यूट्यूब यू कैन ऑल्सो आस्क. नो डाउट, राइट. कल जो टीचिंग एप्टीट्यूड का डेमो होगा ना, ठीक है, उसमें वी विल स्टार्ट विद लेवल्स, सो दैट एटलीस्ट टुमारो विल बी एबल टू कंप्लीट द लेवल्स. कल हम लेवल्स कंप्लीट कर लेंगे. एंड इवनिंग में आज हम करेंगे generations of computers, and then we'll start with the basics of computers like the input and output devices, all that, and then we'll move forward. और अगर किसी को डिटेल्ड शेड्यूल चाहिए ना, लाइक फ्रॉम 1st of May टू December, जब तक ये कोर्स खत्म होगा, लाइक मंडे टू सैटरडे हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ यू नीड द डिटेल्स शेड्यूल यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट मी ऑन व्हाट्सएप. मैं व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स शेड्यूल in the form of Excel file I'll send it to you. Okay everyone, so I hope you had a great session today, because I had a great session today. Take good care of yourself, study hard everyone. Bye. I'm ending this meeting.